Yes, thank you. So, did you plan 24-hour digital dopamine detox? I have seen many people have posted, right? So, my dear friends, now we have learned here, we have removed the distractions and we have replaced one toxic habit with productive one yesterday. And my dear friends, you have broken the instant gratification habit. Okay, instant gratification habit means what? Immediately, if you want to, if you have, craving for something, you have not to jump and satisfy. You have to wait for some time. And after that, you have to take action onto that. For example, you are having food. Already you think now your stomach is full, but your mind is saying, or you can say that just your craving is saying, let's have one more chapati. Okay, so what do you do? Just be little calm, wait for some moment, 30 seconds, leta hu na, no issue at all. But after some time, what you will get one call from inside, are nahi ho gaya abhi aur kya khane ka. Okay, because my dear friends, when we overeat, it does not give any kind of nutrition and all, it makes us sleep. Okay, so always have food 20%, I will say. When you feel like I can take one more chapati, that is the time to leave the your lunch, dinner, whatever it is. Because if you will eat little less, then there will be, in your body, there will be place to have oxygen, to absorb water and everything, right? So don't have with full stomach all the time. Now, are you ready to build a new you, my dear friends? If yes, please type in the chat box, yes. Are you ready to build the new you, to become another you? Yes, Manjunath ji. Others, please. I want a participations of everyone. Gaurav, yes. Only 2 people. अरे भाई इतना slow चलोगे तो कैसे गाड़ी चलेगी? Hey, listen. You all are, in more in numbers. So your speed may be affect me also. So please respond fast. Otherwise, I will go like you guys. चलो आराम आराम से करते हैं. Yes, Radha. Thank you. Everyone, please come into the chat box. Whenever I say, just go and jump into the chat box. Okay. And jump means you have to type, not you have to jump on your screen. Right. So let's go ahead. Now, my dear friends, today we are going to understand secret number 1 of world-class performance. Okay. What is the secret behind the world-class performance? First, what do you, Bill Gates and Mukesh Ambani have common, my dear friends? Have you ever noticed what do all we have common? If the answer is yes, please type in the chat box. What is that common thing which everybody has? Whether it's president, prime minister, whether it's India, America, Britain, London, everywhere. What is the one thing common we all have got, my dear friends? Can you type in the chat box? Anyone can give me the answer? Oh, superb. Gaurav said 24 hours. Very good. You are on right track, Gaurav. Okay. And I think majority of them would have understood because the right knowledge we know. Okay. The problem with the people is they know, but they don't do. Okay. And my dear friends, remember, doing is doing and knowing is knowing. We are here for doing, not knowing, right? No, you know all these facts, but just I'm giving you energy to do it. So successful people wake up early in the morning, majority of them, maximum, okay? For example, Indira Nooyi, CEO of PepsiCo, wakes up at 4 a.m. Richard Branson, Virgin Group owner, and wake up by 3:45 every morning. My dear friends, actors like Johnson, Mark Wahlberg, and Akshay Kumar all wakes up between 4 to 5 a.m. every day. Virat Kohli wakes up at 5 a.m. World-class athletes from Olympic gold winners to chess grandmasters to race car drivers all wake up almost by 4 a.m. and 5 a.m. Narendra Modi wakes up by 5 a.m. Many places we have seen in the interview. Yogi Adityanath wakes up by 3 a.m. and Baba Ramdev, each and every day he wakes up at 3 a.m. because 5 a.m. he comes in the ground for performance. Between 3 to 4 a.m. he gets ready with his rituals, and between 4 to 5 a.m. he practices the asanas, whatever he shows daily. Already he's doing it for many years, but daily he practices. Just can you understand how practice matters? And we people say, what is the need of practicing? So my dear friend, now my question to you, when do you wake up? And where are you in your life? Introspect. When do you wake up? Where are you in your life? Why I'm saying, my dear friends, because somewhere at what time we wake up, this is connected to our existing life also.
Why? Because many times it happens when we wake up late, then we get a feeling of unsatisfaction and a feeling of, my dear friends, you can say that, lower self. Oh my God, late ho gaya. And you feel like that you would have awakened little early, then you'd have do more, right? So that feeling comes, and my dear friends, we want to be in that higher self. That's why we all are here. Now, understand 3 reasons to wake up at 5 a.m. Reason number 1, more productive time. You get more productive time. No, my dear friends, remember, nobody is doing productive after 10 p.m. instead of exceptions. Mostly after 10 p.m., we don't do a lot productive things. How? But I have said exceptions, like, for example, if somebody is in his night job, right? So that person is in exception. Another thing, somebody who is a doctor, who is a surgeon, right? And his job demands even night, so he will definitely perform. It's not like that he will run away or he will half-heartedly perform. Another thing, one more thing, my dear friend, some of them may say, ma'am, my job is at night time, so how I will match in the 5 a.m. club? Listen, 5 a.m. club does not mean only to wake up 5 a.m. and show. If you have time, if you can do, 80% of the population can do, I will say 90% of the population can do, but maximum 10 to 20% population are, maybe they are in nighttime job, or they have circumstances, they go to bed at 4 a.m. like that. Then what do they can do? How can they cope up with us? I'm not saying them to wake up at 5 a.m. here. But my dear friends, the major thing is that here you have to find out your productivity time. Okay, majority of them we can follow this schedule, but I told you some of them 10 to 20% maybe cannot follow their schedule because their job profile is at night. For example, a pilot, he has to go for, he has to work for even at night, so he cannot become a 5 a.m. club member because maybe he has reached home at night 2 a.m. or 4 a.m. like that. So what he can do? So, but what is the main objective of this program? The main objective of this program is on daily basis, getting minimum 2 to 3 hours extra time. In that time, you can script your life by your own hand. You can design your life by your hand, and you have to live that life. My dear friends, remember, imagine if we get 2 hours extra daily on working on our own craft, on our own life, then don't you think after a year our life will be changed? If we will grow at least 1% daily, if we will learn something new 1% daily, don't you think our life will be at another level? So that thing just I want to give you. Okay, now see, nobody is doing, yeah, we did that. Compared to a typical early riser waking up at 7, walks from 8 a.m. Mostly, my dear friend, people wake up by 7 a.m. or 8 a.m. You wake up at 5, start working by 6, you get 2 hours extra till 8 a.m. अब क्या होगा, अगर आप पहले मान लो 7 a.m. पे उठते थे, बट अभी 5 a.m. पे उठने लगे, तो 1 घंटे आपका डेली रिचुअल लगेगा, एंड आफ्टर दैट यू विल डेफिनेटली गेट मिनिमम 2 hours to work on to your own craft and to work on to your health, my dear friends, to work on to your mind, to plan your week, to plan your day, to plan your life, and I will say to plan your 24 hours. Why? Because if you will not be aware, my dear friends, then life will go anyway. Okay, life will, whether you plan it or you don't plan it, life will go anyway. And if you will not plan it, then my dear friends, automation will plan you. In automation, what happens when we live an autopilot life, then we feel bored, we feel, you don't, that my dear friends, we feel dejected, rejected from inside, and we feel lower self. Lower self means what? Lack of confidence, lack of courage, lack of self-esteem, lack of self-worth, and many more. राइट, एंड एनीबडी विल से, चलो हटो, तुम तो इतना लेट सो करके उठते हो, पहले तुम उठना सीख लो, बाकी का काम बाद में कर लेना, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पहले तो तुमको टाइम पे उठना चाहिए. एंड रिमेंबर माय फ्रेंड, टेल मी वन थिंग, इफ our sleep is not in our hand, if our food is not in our hand, if doing exercise is not in our hand, then what we can govern and to whom we can give a good lesson, or we can teach, what we can teach to people who are surrounding us or who are our own. My dear friends, remember, if we want any kind of discipline, then first of all, we have to bring that discipline in our own life, right? So
This is our moral responsibility to respect it, to do something extra for ourselves by which our family members, our children, or our youngers, elders, everybody, younger, even when you will do like such, if you will follow such type of routine, they will see you with the respect, with love, with, an ideal and role model somewhere. Okay, I remember my grandfather, he used to wake up early in the morning, 4 a.m. and he go at 4 a.m. he is in the ground, so probably he used to wake up by 3:45 a.m. right? And the way he holds himself, the way he wear the clothes all the time, white clothes only, okay, safari suit he used to wear. When he walks, energy and aura walks with him, okay. When we see him with lots of respect, lots of love and everything, okay. So just become such a personality to whom you fall in love, in whom people fall in love. My dear friends, listen, this is not fall in love with the male and female. Now, this is the time when you have to fall in love with self-love, okay? Because when you will be fall in love with self, then other people will also fall in love with you. And then your life will become more meaningful and better for yourself and for others too. Now, you wake up at 5, okay, you wake up at 5, start working by 6, you get 2 hours extra till 8 a.m. Then, my dear friends, when you will calculate, you will get on monthly basis 52 to 60 hours extra working hours, okay, or productive hours. What you can do, and in any job, any profile, maximum we work for 7 to 8 hours. 8 hours is the, you can say that, a professional timing which you have to give. But the fact is this, with wholeheartedly, people work maximum, I will say 5 to 6 hours wholeheartedly. मतलब बाथरूम का टाइम निकाल दो, पानी पीने का निकाल दो, चाय पीने का निकाल दो, चिट चैट का निकाल दो, then you will find people work maximum 5 to 6 hours. And I will say, if you will be aware what you are doing at what time, if you are aware with the time zone, and if you will promise to yourself, whatever time I will work, I will be productive, then you will be able to do 8 works of day. You will be able to complete in 4 hours. 8 hours of day, you will be able to complete in 4 hours. And my dear friends, I will tell you, there are people who complete their work in a very short span of time, okay? And they work like they do a lot of hard work. And in that category, I have seen Elon Musk. After this end slide, I will share a story of Elon Musk, okay? Now see, considering 8 hours work days, you get 7 working days more per month, means 7 working days you are getting. Just imagine you are on a job and you are getting 7 days of leave. How will you see yourself? Here, the difference is only this, my dear friends. You're not getting that 7 days of leave at one stretch. You are getting 7 days of leave in 2 hours of format. Okay. And it's good also. It's best, I will say. What will happen? If you are getting 2 hours, then you will be more active and you will get more chance to utilize it. If you will get it 7 days at once, then definitely you will play here and there, you will plan some vacation and all, and things will be over. Now, for people waking up at 9 or later, the difference is 6 to 12 months a year. जो लोग 9 बजे या उसके बाद उठते हैं या लेट उठते हैं, अगर उसमें आप डिफरेंस देखोगे तो my dear friends, all around, if you wake up at 5 a.m., then you are 3 to 4 months ahead from other people. Means 12 months in a year की जगह आपको 4 months extra मिलते हैं. You are getting almost 16 months, right? So for people waking up at 9 or later, the difference is 6 to 12 months. और जो late उठते हैं उनसे तो आप 6 से 12 महीने आगे होने वाले. Then calculate yourself how many hours you are going to ahead in a day. And now calculate yourself how many hours you are going to utilize. And my dear friends, I will tell you, if you wake up at 5 a.m., you can make your 2 hours the most productive hours, your me time, working on your own craft. Another thing, if you learn how to utilize the best use of your time and energy in all day long, then minimum 2 to 3 hours more productive hours you can get in a day if you will be with me
in this journey, okay, further journey. I will give you, my dear friends, 2-3 hours more, minimum 2 hours I'm giving you, extra I can give you. So total you are getting 4 hours in a day, means half working day of a day. और वो half working day आपको क्या करना है? That half working day you are going to spend on yourself. I will give, as I told you, I will give an example of Elon Musk. My dear friends, I saw an interview of Elon Musk. He was sharing his starting days when he was working for Tesla and when he was working to launch that, rocket. And that time, my dear friends, he was working for 20 to 22 hours in a day. Yes, Elon Musk self-declared he was working for 20 to 22 hours in a day, and literally at night he feels so tired. And many a times, and he used to be in the office itself, okay, and he does not go out. He does everything over there. Maximum 2 to 3 hours he used to sleep, okay. And Elon Musk has the habit of taking small you can say that chunk of sleep also, 5 minutes, 10 minutes of relaxation, like that. And he used to walk like a dog. What he was saying, by this I was able to complete what people complete in a year, I was able to complete in 4 months. Means I was able to complete 4 years of work in 1 year. That's how he got succeed. So those who says hard work nahi karne ka, smart work karne ka, I will say, my dear friends, it's nothing. Please, if you want to do great in your life, you need hard work. Okay, you must do hard work, but hard work should be in a right direction, okay, in a right way. And be smart also, but don't forget, you have to be out of hard work. You have to do hard work anyway. Now, as reason number 1 we have discussed, we get more productive time. Now reason number 2 for wake up early in the morning 5 a.m. is it transform your belief system. Yes, my dear friends, this habit, you go from feeling behind others to feeling big ahead of others. Then you go from believing you can do it actually and doing it. Means ऐसा नहीं रहेगा कि आप बस बोलोगे मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ. When matter comes for doing, here you have to come and show up. When people see I'm conducting this time session, many people say, my God, इस time क्यों लेते हो? You disturb your sleep and others. I say to them, I love disturbing to myself and others both, because I know whatever is easy, it makes life difficult. And whatever is difficult, it makes life easy. I want to make life easy and productive. For that, we have to accept this reality, right? For a time being, लगता है नींद आ रही है या whatever you say, drowsiness है, like that. But after doing certain practice, after a certain time, you will be in this habit of waking up early in the morning. You go from feeling sorry for yourself to respecting yourself and even boasting about waking up early to others. Yes, my dear friends. अगर आप लेट उठते हो तो क्या फीलिंग आती है? आप सोचो आप कभी 12 बजे सो करके उठे, 10 बजे सो करके उठे. What feeling you get? Do you feel अरे मजा आ गया, आज 12 बजे सो करके उठा? No. I will say, my dear friend, a guilt comes. अपने आप को ऐसा लगता है, my God, क्या हुआ था मुझे? मेरे को मतलब कुछ क्या मैंने खाया था, क्या मेरे why I slept at this time. Means हम उठे तो एक ऐसी फीलिंग के साथ उठते हैं. अगर हम लेट सो करके उठे, ज्यादा लेट, तो अपने आप से कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि अपनी रेस्पेक्ट अपनी नजरों में कम होती है और हम लोअर सेल्फ फील करते हैं, राइट? मैं बहुत ज्यादा यू कैन से दैट नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं कर सकती. इसके लिए व्हाट यू फील लाइक इन सच सिचुएशन, यू नो दैट. ओके, सो you go from getting that late feeling every day to the being early and feeling ahead every single day. आप सोचो हर एक दिन की शुरुआत ऐसे करो कि आपको अपने आप पे गर्व हो, आपको लगे कि ना मुझ में भी कुछ बात है, मुझ में भी कुछ खास है और मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो करना चाहता हूँ. बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप पहले सुबह उठते हो, आप फ्रेश एयर में जाते हो, आप जब नेचर से कनेक्ट होते हो, बर्ड्स को देखते हो अपने काम पे लग गए हैं, नेचर एक
कूलिंग और ब्यूटीफुल एयर देती है, वहां पे जब आप सांस लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको एक नया एक्सपांशन मिलता है, एंड दैट न्यू एक्सपांशन टीचेस यू अ लॉट इनडायरेक्टली, okay, and it expands your potential, it expands, it accepts you, you get more self worth and self esteem to yourself, and definitely my dear friends, आपको self worth और self esteem खुद की नजरों में बढ़ेगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपके फ्रेंड, लव्ड वन, फैमिली मेंबर्स, वो सब भी आपको ज्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ लव से देखेंगे। नाउ रीजन नंबर 3, इट ट्रांसफॉर्म योर इमेज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड आउटसाइड वर्ल्ड के लिए आपकी इमेज चेंज होगी। इस टाइम अगर आप उठे हो तो आपके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, अरे वाह, ये तो नए मिशन पे है, ये तो कुछ अच्छा कर लेगा, राइट। और अपने जैसा कोई कॉम्पिटिटर दोस्त रहेगा तो बोलेगा, अबे उठना तो मुझे भी उठा देना, ऐसे नहीं अकेले उठना। राइट, सो योर फैमिली स्टार्ट रेस्पेक्टिंग यू मोर, डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड। जो फैमिली बोलती थी तू सोता रहता है, वो आपका रेस्पेक्ट और ज्यादा करती है। एंड व्हेन यू नो whatever you get, it gets zoomed in. If you will get lots of appreciation, you will work for appreciation. If you will get lots of criticism, आपको पता है, अगर कोई आपकी शिकायत करे और हमेशा आपको आर्ग्यू करे, उंगली दिखाए, तो आप क्या कहते हो, ठीक है तेरे को जो करना है कर, मैं जैसे हूं वैसे ही रहूंगा, मैं जो कर रहा हूं वही करूंगा, right? In the same way, when we do something right and we get reward for that, we want to do it more because it's my tendency. If it is good, let it be more. If we feel good, then we say to ourselves, let it be more. Mind की टेंडेंसी है कि अगर हम किसी भी चीज को अच्छा फील करते हैं करने के बाद में, तो हम बोलते हैं थोड़ा और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड देखो ये हर चीज में लागू होता है, अच्छी चीजों में भी और बुरी चीजों में भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हो, वो खाना आपको अच्छा लगा, मान लो कोई गुलाब जामुन पसंद है, आपने एक खाया, एक अच्छा लगा, फिर आपका माइंड क्या बोलेगा, लेट इट बी मोर, चलो दो खाते हैं, दो खाने, लेट इट बी मोर, चलो तीन खाते हैं, लाइक दिस, ओके। अगर आप, एक बात बोलूं, अगर आप हैबिट डालोगे 5 बजे उठने की, देयर विल बी टाइम कि आपकी लाइफ में ऐसा भी होगा कि आपका माइंड बोलेगा, अरे 5 क्यों, चलो 4 बजे उठते, कंप्लीट ब्रह्म मुहूर्त का फायदा लेते हैं, राइट। बिकॉज वट एवर वी डू, एंड इफ इट गिव्स मी द फीलिंग ऑफ goodness, feeling of strength, feeling of empowerment, then our body cells, all 80 billion neurons and 60 billion cells, let it be more, अच्छा चलो और करते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि जो चीज से आप अट्रैक्ट होते हो, वो चीज आपकी लाइफ में बढ़ती जाती है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जाता है। योर फ्रेंड्स स्टार्ट एडमायरिंग यू, योर बॉस, कलीग्स, बिजनेस पार्टनर एडमायर योर परफॉर्मेंसेस एंड यू गेट मोर डन। आप डेफिनेटली ज्यादा काम कर पाओगे, ज्यादा परफॉर्म कर पाओगे, और घर से लेके ऑफिस तक, इवन अगर आप बिजनेस ओनर हो, एम्प्लॉइज, हर कोई आपको अप्रिसिएट करेगा। अरे मेरे बॉस तो 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, ऐसा लगता है कि हमने पहाड़ तोड़ा, जबकि हमने पहाड़ नहीं तोड़ा, हमने अपनी एक बैड हैबिट तोड़ी, ओके, राइट। सो all of these people's admiration boosts your self-esteem and self-confidence. My dear friends, remember, आपका बैंक बैलेंस कितना है वो सेकेंडरी है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या नहीं वो सेकेंडरी है, लेकिन मैं बोलूंगी कि सबसे पहले आपका सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बैंक बैलेंस ज्यादा है, लेकिन अगर आपका सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, तो माय डियर फ्रेंड्स, यू विल फाइंड द बिगेस्ट डिफीट फ्रॉम विद इन, ओके। आपको अंदर से हार फील होती है, जो कि अच्छी नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या करो, आप अपने सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। और आज मैं आपको एक मेडिटेशन करवाऊंगी, जिसमें कि कैसे आप अपने सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर, when we build this, it increases more and more, and we get the positive effect in our life, and we get the power of completion energy. We inculcate a lot of activation energy in us. हम अपने अंदर किसी काम को करने की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको जनरेट करना सीखते हैं। And when we learn how to generate activation energy, then we get the habit of completing the work, okay, and we finish the work whatever we start. Here I would like to tell you, my dear friends, there are two kind of people. One who are initiators, and second who are finishers. Initiators वो डिसीजन तो ले लेते हैं ये करना है। फिनिशिएटर्स क्या करते हैं, वो उस काम को अंतिम मंजिल तक पहुंचाते हैं और फिनिश करते। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट्स हो, 27, कल कितने थे, ऑलमोस्ट 30 थे। उन्होंने डिसीजन तो लिया, शुरू किया, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट व्हाट आई विल से,
with all 21, my dear friends, I will give you applause to all of you. You all are finishers. You are here today and you will be here tomorrow. This is my expectation from you. Okay. So now type in the chat box, if you are going to finish, means by tomorrow, if you are going to be with me, type in the chat box F. Because I want, my dear friends, you learn how to finish. आप कुछ सीखो या ना सीखो, आप आगे मेरे साथ कंटिन्यू करो या नहीं करो, वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको फिनिश करना तो सिखाऊंगी। और आप प्लीज आज से अपने लाइफ में एक डिसीजन लो कि आप किसी भी काम को स्टार्ट करोगे तो उसको फिनिश करोगे। कोई भी काम हो, दूसरे काम में तब तक नहीं कूदोगे जब तक पहला फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता है 4-5 हम जो है रास्ते खोल देते हैं और उसके बाद भी किसी को भी फिनिश नहीं कर सकते। सो नाउ प्लीज कम इन द चैट बॉक्स एंड टाइप एफ इफ यू आर गोइंग टू। Yes, thank you. Others, please, everybody, it's not for one person, my dear. It's for everyone. I'm not doing a pravachan. Okay, somebody has unmuted himself. Let me check. Okay. All right. So, my dear friends, you will start loving this life and never want to go back to waking up late again. What will happen? One more point is here. All of these people beliefs about you reinforces your own belief system and further strengthens you, and the cycle goes on. Means those who will be in this habit, they will be with you and you will also become a power for them. Those who wants to adopt this habit, and you will start loving this life and never want to go back to waking up late again. And my dear friends, once when you will start this life, then you will never ever go back again into your past habit, but it will take time. And remember, my dear friends, to build any habit, minimum takes, you know how much time it takes? Almost to build any habit in our behavior, it takes minimum 90 days. How many days? Minimum 90 days. But it starts for one step, for 1 day, 2 day, 3 day, 30 day. After that, you go for 60 and then you go for 90. Somebody was raising hands. I will take questions at the end, my dear, not in the between. Okay. So already we have covered how we have to get up 5 a.m. All these 3 slides I have covered yesterday, right? Now, remember, my dear friends, the world inherits the brave. ये जो धरती है ना, वो वीरों का सम्मान करती है. You know, फार्मर के पास पैसे कम होते हैं, बट फार्मर का सम्मान बहुत है. आर्मी को बहुत ज्यादा वेतन नहीं मिलता है, बट दे आर known for his bravery. Farmer and army, if you will see, we have to be proud of them. Just imagine you have all the money, lots of gold, lots of diamonds and everything, but you don't have to eat anything. You don't have fruits, you don't have vegetables, you don't have corn. कोई अनाज नहीं, कोई फल नहीं, कोई सब्जियां नहीं, कुछ भी नहीं, और पानी भी नहीं, क्योंकि आज जो मशीन है वो पानी को बाहर करती है. पहले के टाइम में कुएं को भी जो होता है लोग खुद जा करके, मींस यू नो, दे यूज्ड टू डिग देमसेल्व्स एंड टेक द वाटर फ्रॉम द वेल. टाइम ऐसा था, देयर वाज अ टाइम. एंड स्टिल यू नो, फार्मिंग में किसान को लगना ही पड़ता है. फार्मर हैज टू पुट हिज एफर्ट. So the world inherits the brave, and that's why, my dear, we all have to become brave. It has been said in Hindi, this saying is वीर भोग्या वसुंधरा. वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होते हैं वो इस धरती का उपभोग करते हैं. And we all have to become that veer, my dear friends, in our life. Veer and virangana, whatever you say. Okay. So it's the day 2 part only. It has started from there, not to worry at all. Now, my dear friends, we are going to discuss the second secret. Secret number 2, it's written 2, 3 is mentioned, but it's 2, of world-class performance. World-class performance का secret number 2 क्या? पहला तो वो पहले जल्दी उठते हैं और वो perform करते हैं, they do better. Another, my dear friends, the second part is what? Ask a question from yourself, everybody. Where do you live or where do we live? हम कहाँ रहते हैं?
You will say, I live in a home, I live in a bungalow, I live in a whatever you answer. But the fact is, we live in this body. We live in this body. And my dear friends, that's why we cannot deny this body. And what we have to do, we have to be careful, because this body is a medium for expressing all divinity from us and every possibility. This body is a medium. That's why in our religion, it has been also said, this body is a temple. As temple is a place for God, this body is also temple for us, because we all are somewhere, lights of God. और भगवान को अपने टेम्पल में बिठाया, हम खुद यहाँ पर हैं. Even when God has come on this universe, he has also come in the body. So we cannot deny this body. But my dear friends, remember, this body is not only one component. This body is made up of three things. What is that? Mind, body, and soul, all three together. If we want to take the complete advantage of our life, then we have to align all these three together, our mind, body, and soul. And for this, my dear friends, for your body, what you need exercise. For your mind, what you need meditation. And for soul, what you need, for mind, for body, you need exercise. For soul, you need meditation. And for mind, you need at the same time education also. When you educate yourself, here what are you doing? You are educating yourself. You know the things, but you are knowing again, you are ready. Conscious awareness you are bringing to know these things in little more detail, by which you can apply. Your main motive is coming here to execution. आप यहाँ पे इसलिए नहीं है कि आपको ये चीजें मालूम नहीं है. आप सबको पता है सुबह उठना चाहिए, अच्छा होता है. फिर भी मैं एम्फेसिस कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ क्यों. क्योंकि आप अपनी लाइफ को अलाइन कर सके, इंपॉर्टेंस को समझ सके. क्योंकि जब तक किसी चीज का फायदा हमें नहीं पता चलेगा, तब तक उसको हम करेंगे नहीं. तो एक्सरसाइज क्यों हमें करना चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, वी नो ऑल सक्सेसफुल पीपल डू एक्सरसाइज एंड वॉक. तो पहले तो हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स को हमें अपने अंदर लाना होगा. और वो हैबिट्स क्या है? वी ऑल हैव टू डू एक्सरसाइज. देन we know the great personalities. Narendra Modi does yoga every morning. Even Yogi Adityanath does, and many ministers, chief ministers, and previous presidents have also done that. Every CEO and successful business person exercises for minimum 15 to 40 minutes. Sports person, athletes exercise more than most people, my dear friends. And everything you know is about exercise is a lie. अब समझना, आपकी को मैं आई ओपनिंग कुछ फैक्ट्स देने वाली हूँ. अभी तक आपको एक्सरसाइज के बारे में जो बातें बताई गई थी वो सब झूठ है. क्या? यू नीड टू एक्सरसाइज टू लूज वेट. आपको एक्सरसाइज करना है वेट लूज करने के लिए? ना बाबा ना. आपको हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करना है. और वेट लूज का एक्सरसाइज से कितना संबंध है मैं आपको बता दूं. less than 20% of your body shape is affected by exercise. The rest 80% can only be changed by changing the diet. मतलब ये कि अगर आपने अपने डाइट को कंट्रोल किया तो आपको वेट गेन का या ओबेस का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं. वो आप मैक्सिमम कंट्रोल कर लोगे 80% तक. किससे? बस अपने डाइट, प्रॉपर डाइट से. और एक्सरसाइज करो 20% वेट लूज करने में या वेट गेन करने में रहेगा. Now matter comes, my dears, then why to do exercise? फिर कभी कभी लोगों को लगता है exercise will make you tired. No, my dear friends, exercise instead gives you a boost of energy. Another fact, exercise is not needed if you are already slim. अगर आप slim हो तो आपको exercise की जरूरत नहीं है. It's wrong notion, my dear friend. Exercise has nothing to do with being fit or being slim. Okay, we all must need exercise. And understand one scientific survey I will tell you. If we are in the age of 30 or above than that, and we are not suffering from any kind of disease. अगर आप 30 साल के हो और आपको कोई भी बीमारी नहीं है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर आप 30 साल के ऊपर होने जा रहे हो और आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और आज की लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, मतलब आप जॉब कर रहे हो, घर पे आ रहे हो और आप बोलो नहीं मेरा वेट तो, आपका डाइट भी सही है, आप खाना भी ठीक ठाक खाते हो, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में आप बीमार नहीं होगे. I'm sorry to say, my dear friends, delete. आप सब लोग हेल्दी रहे, मैं तो ये बोलती हूँ. But if we will do exercise, then there are 100% chances to be healthy. But if we will avoid exercise, there are chances to get diseased body. क्योंकि एज के साथ भी बीमारियां आती हैं.
ठीक है, माइंड के लेवल पे आप वर्क करोगे, डेफिनेटली चीजों को हील कर लोगे, बट आपको बॉडी का सपोर्ट भी जरूरी होता है। 30 तक हम बहुत यूथ रहते हैं, यंग रहते हैं, जो भी बॉडी में टूट फूट होती है वो रिपेयर हो जाती है, बट 30 के बाद में कुछ चीजें होती है जो कि एक्सरसाइज के थ्रू हमें काफी सपोर्ट मिलता है। दैट्स वाई वी ऑल हैव टू डू एक्सरसाइज टू बी फिट एंड टू बी हेल्दी एंड टू सेव अवर मनी। इट्स ओके टू नॉट एक्सरसाइज व्हेन यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स। लोग कहते हैं नहीं आजकल मेरा टाइम अच्छा नहीं है, मैं बहुत डिस्टर्बेंस में हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और जो है मेरा मूड ठीक नहीं है, सो मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मैं जब ठीक सब कुछ हो जाएगा तब मैं करूंगा, मूड ठीक हो जाएगा, सिचुएशन ठीक हो जाएगा, फाइनेंस ठीक हो जाएगा, देन आई विल डू। माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर, अगर आप वो जितना भी एक्सक्यूज दिए ना कि मेरा ये बराबर नहीं इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो सुनो, अगर आप उन चीजों को ठीक करना चाहते हो तो एक्सरसाइज करो, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि ये आपके मूड में डिफरेंट पॉजिटिव हार्मोन्स को जनरेट करता है, बहुत सारे डोपामिन, सेरोटोनिन और डिफरेंट जो पॉजिटिव हार्मोन्स है वो जनरेट होंगे, और उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो, जहां पे आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, जो डिजीज से आप दवा खा खा करके थक गए थे, उन चीजों को आप जो है रिकवरी करने में आपको बहुत काम करेगा, राइट। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, एक्सरसाइज बीमार लोगों को करने के लिए नहीं बना है, एक्सरसाइज हम हेल्दी लोगों को करने के लिए बना है, जिससे कि हमारी बॉडी हमेशा हेल्दी रहे। और अगर बाई चांस किसी भी प्रकार से कोई बीमार हो गया या उसको कोई बीमारी आ गई है, तो उसको तो मस्ट ही है, वो तो सोच भी नहीं सकता कि वो नहीं करेगा। व्हाई? टेक द एग्जांपल ऑफ थायराइड, बीपी, शुगर, autoimmune, all kinds of disease and everything. Don't you think people are taking medicines? बट कितनों का बीपी ठीक हो गया, कितनों का थायराइड ठीक हो गया, कितने का शुगर ठीक हुआ, कितनी बीमारियां ठीक हुई। सब बोलते नहीं दवा खाते रहो, मैनेज होगा मैनेज होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट डूइंग ग्रेट जॉब, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, बट द थिंग इज दैट इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज, तो देखो दवा तो खाने की चीज तो है नहीं कि आप सुबह शाम दोपहर खाने की तरह खाओ, लेकिन सच्चाई है कि लोग आज खाना कम खाते हैं, दवाइयां ज्यादा खाते हैं। और अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है और आप खा रहे हो दवा, तो दवा तो कुछ कर रही है, क्या कर रही है आप खुद सोचो। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके, लेट्स गो अहेड। सो व्हाट एक्सरसाइज रियली डज, एक्सरसाइज रियली क्या करता है, आप उस बात को समझो यहाँ पे। ओके my dear friends, exercise boosts your mood and energy immediately by producing dopamine, serotonin and noradrenaline. Noradrenaline क्या है? Noradrenaline is it kills laziness. जो लेजीनेस हमारे अंदर आता है ना, उसको किल करता है। आप सोचो, मतलब कि लेजीनेस भी ऐसे नहीं आता जब हम एक्सरसाइज नहीं करते और डाउन फील करते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो एक हम स्टेट क्रिएट करते हैं, और स्टेट के फलस्वरूप हमें लेजीनेस आता है और फिर उसको हम कंटिन्यू करते हैं। दिस ऑल्सो विल बी किल्ड बाय एक्सरसाइज। इट स्ट्रेंथेन्स योर मेमोरी, हिपोकैम्पस, ये हिपोकैम्पस होता है, ये मेमोरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको बूस्ट करने में एक्सरसाइज काम करेगा। देन and my dear remember, it's not my sentence, okay, it's the research paper, okay. So it strengthens your memory, hippocampus, critical to form and retain long term memory for facts and events. It improves focus, allows you to pay attention for longer time. It is the best health insurance, physical in my dear friend, exercise is the best health insurance. आप लोग जाते हो पैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं। आज मैं देखती हूँ, आई हैव सीन पीपल दे बाय हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एंड माय डियर फ्रेंड, छोटी छोटी बीमारियां होती है, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। क्यों? बोलते मैंने इंश्योरेंस लिया है ना, मेरे पास हेल्थ प्लान है, तो वो पैसे क्या होंगे, लेट्स यूटिलाइज इट। आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वर्स्ट थिंग। प्लीज ऐसा मत करो। छोटी मोटी बीमारी है उसके लिए आप एडमिट वगैरह होने मत जाओ, भूल जाओ। जो आपने इंश्योरेंस प्लान लिया, आप इस इंटेंशन से मत लो कि आप बीमार होगे और उसे यूटिलाइज करोगे। आप हेल्थ इंश्योरेंस लो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आप इस इंटेंशन से लो कि आपने ये चैरिटी करने के लिए लिया है। You have taken it for charity, not for utilizing this. Why? Because you are sending a negative vibes to the universe, मुझे बीमार करना। ठीक है, तो प्लीज कोई भी इंश्योरेंस लेते हो उसको ये मान के चलो चैरिटी के लिए लिया है। ठीक है, यू हैव नॉट टेकन फॉर यूटिलाइजिंग योरसेल्फ। ओके, so my dear friends, you have found it. This is the best insurance which you can find. And now understand your transformation over time. जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हो तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड हाउ दैट ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, डे वन, अगर डे वन में आपने ज्यादा एक्सरसाइज किया, मान लो
20 मिनट, 1 घंटा और थोड़ा अच्छी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज की, तो व्हाट विल हैपन, डोम्स विल happen in your body. Okay, DOMS will walk for some time with your body. How? DOMS means what? Delayed onset muscle soreness. मतलब थोड़े टाइम के लिए आपके बॉडी के जो मसल्स हैं उसमें पेन होगा, मांसपेशियों में. ओके, एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप, अब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको पता है कि मान लो बहुत दिनों से नहीं कर रहे थे और संडे को टाइम मिला और उन्होंने 1-2 घंटा कर लिया, फिर तो बाप रे, आफ्टर 2 hours दे विल फील पेन लाइक एनीथिंग. थाइस पेन कर रही है, फिर इधर से जो है हाथ में पेन है, मतलब देयर होल बॉडी समवेयर गेट्स पेन. व्हाई? क्योंकि बहुत टाइम से उसको जो है बॉडी को जगह नहीं मिल रही थी स्प्रेड होने के लिए. जो मसल्स थे वो पूरे जो थे मतलब श्रिंकन थे, सिकुड़े हुए थे, अभी उनमें जो है ब्लड फ्लो बढ़ा है, तो वो थोड़े टाइम के लिए सोरनेस आता है. तो व्हाट हैपेंस, दिस पेन विल बी ओनली फॉर 72 आवर्स. तो प्लीज आप डरो मत, फिर अगले दिन करे कि नहीं ये मैटर आता है. तो व्हाट आई विल से, प्लीज डू इट नेक्स्ट डे ऑल्सो फॉर सम टाइम. उतना स्ट्रांग मत करो, थोड़ा लाइट करो. ओके, बट करो, क्योंकि छोड़ दोगे तो मतलब नहीं. और 72 आवर्स बाद पक्का वो आपका जो है, जो पेन हुआ था थोड़ा मसल्स वगैरह में, वो ठीक हो जाएगा. जो जिम वगैरह जाते हैं और रेगुलर करते हैं उनको पता है. अनदर थिंग, वीक 1 to 3 व्हाट विल हैपन, better quality sleep you will find. Then body produces more mitochondria, which is very much important for our health. Then week 6 to 8, mitochondria increases by up to 50%. Endurance and stamina increases. Menstrual cycle becomes regular in women. And in 6 months muscles begin to take shape. 6 महीने तक अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं. लेस लाइकली टू स्टेप, कैन रन फास्टर फॉर लॉन्गर. और फिर आप लंबे समय के लिए मैराथन वगैरह भी अगर दौड़ना चाहो तो आप दौड़ सकते हो. और लेकिन रेगुलर उसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और अपने स्टैमिना को इंक्रीज करना पड़ता है. In 1 year, what happens, my dear friend? Bones become denser, reduces risk of osteoporosis, and proven to even reverse osteoporosis after 12 months. Osteoporosis जैसी बीमारियां भी हैं जो कि दवाइयों से ठीक नहीं होती, वो एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है. प्लस किसी को नी पेन, कितने लोग नी प्लांट वगैरह कराते हैं, अगर वो भी रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे तो ये चीजें आप ऑटोमेटिकली, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक हो जाएंगी. ओके, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ माय मदर. A year back she told me she has a cataract in her eyes, a doctor has detected. Then I told her at least she does pranayama and everything. She was also earlier in the mindset of and having medicine and curing disease like this, but once she was very much ill, she came to me. Anyway, shortcut story, I explained her very well, mama, please believe in yoga and pranayama, try to be afar from medicines. Okay, heal yourself from within. All this I taught her. Anyway, she is my mom, but she learned different things from me. And when she saw my lifestyle, then she started following me also. I taught her how to do pranayama and everything. To shortcut, a year back, the doctor detected cataract in her eyes, and she started doing the pranayama and everything, and she started putting some Divya Drishti. There is one eye drop from Baba Ramdev. And it was cured. Doctor told her for operation, she was ready for this year for operation, but it is completely removed from her eyes itself. कोई ऑपरेशन कुछ भी नहीं हुआ, कोई दवा भी उन्होंने नहीं खाया. ओके, बट हाँ, शी डज योगा एंड प्राणायाम डेली. तो आप सोचो कि देखो, आप औजार लगा के ऑपरेट कराओ अपने बॉडी को, इट्स नॉट अ गुड साइन. ओके, सो वॉट एवर इज पॉसिबल, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू बी फिट फ्रॉम your awareness. Okay, and 20 minutes, 30 minutes we can give for our health. Ultimately, we are with this body, so we have to respect this body, and whatever is required we have to give it. So your transformation over time, long term transformation होने वाला है. lower risk of developing arthritis, type 2 diabetes, dementia, colon and breast cancer, ये सब बीमारियां आपके लाइफ से जाएंगी. हार्ट अटैक से भी आप बच जाओगे. quality of life will be better. And my dear friends, you will lower stress, and there will be very low secretion of cortisol and adrenaline, which is negative hormones which disturb us, which disturb our mood, groove, flow. Okay, so and all positive hormones starts secreting in your body, which gives you energy, stamina, strength. So side benefit, money, आप बहुत सारे पैसे बचा पाओगे. Older people who exercise at least 5 days a week save over 60 to 80% of medical expenses. जो older people होते हैं
एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, वो 60 to 80% मेडिकल एक्सपेंस को बचाते हैं, और वो पैसे आप वो खुद के ऊपर और अच्छे से लाइफ को जीने के लिए यूज कर सकते हैं, पिलग्रिमेज के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर मेनी थिंग्स दे कैन यूज, एंड दे कैन गिव टू देयर चिल्ड्रन ऑल्सो, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल्सो. Now, my dear friends, today I will send you one audio, the strangest secret in the world, in group. What I will request you, आपको जब भी टाइम मिला प्लीज आप इस ऑडियो को सुनना, और आज से आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आपको इस ऑडियो को डेली सुनना है. कब तक? जब तक कि उसकी सारी बातें आपके माइंड में जाके इंस्टॉल नहीं हो जाती. दूसरी बात, आई विल सेंड यू दिस ऑडियो इन 2 लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. व्हाट आई विल रिकमेंड यू, प्लीज लिसन वट एवर इज योर मदर टंग. Why this audio, my dear friends? आज की डेट में जितने भी मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सेल्फ हेल्प गुरुज हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, सबका निचोड़ की अगर आप बात करो, अगर सबके जिस्ट की बात करो, तो वो स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड में दिया हुआ है. इवन वो ऑडियो कहाँ से मैन्युफैक्चर है, आई विल से दैट ऑडियो इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द बुक एज अ मैन थिंकेथ बाय जेम्स एलन. ओके, तो अगर किसी के पास ये बुक है एज अ मैन थिंकेथ by जेम्स एलन, आप जरूर पढ़ना. बहुत पतली सी बुक है, अंडर 50 पेजेस, 40 पेजेस वो बुक है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक. आई हैव रेड, आई हैव दैट बुक, एंड प्लीज डू इट. एंड डेली आपको सुनना है माय डियर फ्रेंड्स. कब तक सुनना? और मैं बोलूंगी ना कि सुनने का भी, अब आप बोलूंगी आधा घंटा वो सुनना, ये सब इतना सब कैसे होगा ज्योति मैम? लिसन, आप सो करके उठते हो, आधा घंटा तो वैसे वेस्ट करते हो, थोड़ा घूमने में, टहलने में, उठने में, बॉडी को रेपो में लाने में. दिस तो व्हाट यू डू. फोन को तो हमेशा आपको दूर रख के सोना है. जैसे सो के उठे आप, इट स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, जस्ट स्विच इट ऑन. ओके, एंड wherever you are going, just listen it. Some Aboli sir, please mute yourself. You have unmuted. Namaste, sir. Taking more time and just working on it again. As I told you, I wanted to submit it yesterday, but I'm still taking a little more time. Please don't mind. I will send it today morning as soon as the class is over. Wait for a moment. I'll just some participants. Okay. Now, my dear, I'll continue till 15 minutes more. Is it okay for everyone? Then type in the chat box yes. 15-20 minutes more we will go. Is it okay for everyone? Type in the chat box yes. Thank you, thank you, thank you. Yes, because your permission is required. Maximum we will go by 7:30, otherwise 7:20 or 25. Okay. Friends, listen. Strangest secret in the world is something which will change your mind at 360 degree, but you need to listen it with awareness, and you have to follow whatever that audio is saying. Another thing, please listen in your mother tongue. If your mother tongue is Hindi, listen in Hindi. If English, listen in English. Other language में available नहीं है, आपको खुद translate करके करना होगा. ठीक है? तो जो language आपको better पड़ता है, you do it. And my dear friend, it has been said, this audio has made a lot many people rich. Okay? So if you want to reach and increase finances in your life, do it. Understand, my dear friend, what is the law of attraction? The law of attraction theory has come in 2006 by Rhonda Byrne book, The Secret. But this is, I will say, this is the ancient philosophy which is taken from Buddha and many of our religion and saints who has given this law of attraction. Law of attraction is what? Whatever you want in your life, you attract. If with awareness and consciousness, you are focusing onto that thing, or whatever you will speak, you will attract in your life. Means, understand, law of attraction, 3 चीजें इसमें आप ध्यान दो. Whatever you think about, whatever you speak about, whatever you think about, whatever you speak about, whatever you feel about, you bring about. 3 शब्द थे. Think, speak and feel. Whatever you think about, whatever you speak about, whatever you feel about, जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो महसूस करते हो, वही आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो. So my dear friends, remember now onwards, if you are saying any word from your mouth, what is that? वो empowering है कि disempowering है? वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? For example, you want to reach on time at your office or at your workplace.
but you are saying to yourself, मुझे लेट नहीं होना चाहिए. आपको चाहिए क्या? आपको टाइम पर पहुंचना है, लेकिन आप यूनिवर्स को बोल क्या रहे हो, मुझे लेट नहीं होना चाहिए. ये माय डियर फ्रेंड, दिस इज द रॉन्ग फ्रेमिंग. ओके, आपको अभी तो समझ लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब इतना, आपको जो चाहिए वो बोलना है, जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये बोलना है, मुझे टाइम पर पहुंचना है, आई हैव टू रीच ऑन टाइम, दिस शुड बी योर focus. But we human beings are made in such a way, in a day, more than 60,000 thoughts come into our mind. And more than 90%, 95% thoughts are negative. That's why if you want to do any business, if you want to change your job, or if you want to do something extraordinary in your life, then your mind, your subconscious says, अरे अरे नहीं, ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा, अभी तो कुछ किया नहीं तुमने बहुत बड़ा, और अभी तुम बोल रहे हो इतना बड़ा करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है, जैसे है वैसे रहने दो. Why it happens? Because if you will take any decision to do something, then your body demands a lot from you. फिर क्या होगा? अगर मान लो आपको 5 बजे उठना है, तो इसमें 2 तरीके के लोग होंगे. देखो, कल तो 30 आए थे, आज कम हुए. क्यों कम हुए? क्योंकि उन लोगों को लगा रही चलो एक दिन उठा ना, भी रोज रोज कैसे यार, मैं तो कल लेट सो के उठा, लाइक दिस. Then somebody has the network problem and all. It's not intentionally people has not come, right? So because maybe somebody from rural areas, so there is no electricity, like it may be anything. I'm not saying or blaming anybody. What is the main motive over here, my dear friend? Understand the law of attraction. Law of attraction says, whatever you want, just say that thing only and you will attract it. But if you will say something which you don't want, if you will utter that statement, if you will give the vibration to that statement, that will be also you will bring in your life. For example, you want your child should be focused and he should concentrate on things, but you will say, तुम तो ऐसे ही मस्ती करते रहते हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? आप बच्चे से क्या चाहते हो? He should be focused. तो आप अगर उसको कमांड्स दे रहे हो तो बोलो बेटा ध्यान से करो, बी फोकस्ड, और फोकस सिखाओ भी फोकस कैसे करते हैं, कंसंट्रेशन कैसे करते हैं. ऐसे मुंह से बोलने की बात नहीं है, और अभी मैं यहाँ पे आपको नहीं सिखा सकती. इट विल टेक टाइम, राइट? सो we did this strangest secret in the world. I will send you. You all have to go through that audio. Yes, my dear friends. Understand the secret number 4 of world-class performance. And what is that? They know exactly where they are going, even if they don't know how to get there. We all must know where we have to go. ये नहीं पता भले हो कि आप कैसे पहुंचोगे, but at least you must know what do you want in your life and where you have to go. For example, there is a story of Jim Carrey, and it happens in everybody's life, my dear friends, common life. Many times we decide a goal, but we don't know how to reach to that goal. But maybe we visualize it, or we keep in our, something, just remember something which is very much close to your heart. You want to achieve it and you do not have any idea how to achieve it, but you are so much eager to achieve it. And maybe you do not have money, you do not have resources, you do not have clue how to achieve it, but you have achieved that thing. How many has experienced this thing? Please type in the chat box me. आप किसी चीज को पाना चाहते थे, आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे नहीं थे, चीजें नहीं थी, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, कैसे मिलेगा? फिर भी आपको चाहिए था, आपने अपने अंदर ये प्रॉमिस अपने आप से किया था, और आपने आपसे जो बन सका आपने किया, और अल्टीमेटली आपने लाइफ में ये पाया कि वो चीज आपको मिली है. How many has experienced this? Please type in the chat box me. Yes, many of them. Thank you. Yes, my dear friends. How it has happened? Tell me. आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे नहीं थे, लोग नहीं थे, फिर वो कैसे मिला? वो ऐसे मिला क्योंकि आपके इनर कोर को मालूम था कि नहीं बाबा इसको चाहिए, इसको दे दो, नहीं तो हमें चैन से रहने नहीं देगा. He is not going to allow us to leave me in peace. Please, my dear friends, whatever you want in your life now, put this energy. I will tell you my example. There were certain things. One thing I wanted, the cost was, that thing was 8 lakh rupees. How much? 8 lakh rupees. I wanted it, and that time I do not have money. I wanted it in free, and do you know, I made it. I made it in free. It's not one thing, many things I have done it. I have done it. If I do commit to myself, I want this thing, then that thing will come in my life with my time,
and in whatever conditions I put or in whatever circumstances I want, things becomes easy and it starts getting changed for me. The same, it's not about my energy, it's about your energy also. अगर आपको कोई चीज चाहिए और आप पूरी शिद्दत से उस पर लग जाओगे, आपका फोकस वहां पे जाएगा, तो आप ये ध्यान देना, जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो दो चीजें होती है. टेक एग्जांपल, आपका गोल है, ये आपका, लेट्स कंसिडर आपका गोल जो है, इफ यू कैन सी माय हैंड, this is you, this is your goal, right? Now you have started reaching towards your goal. तो क्या हो रहा है, आप अपने डिस्टेंस को कम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. अभी ऐसा नहीं आपका गोल वहीं पे रहेगा, वो भी आपके पास आने के लिए मेहनत करना शुरू करता है और आपका डिस्टेंस और कम हो जाता है. क्योंकि जितना एक्साइटमेंट आपको अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए है, उतना ही उस एनर्जी को भी आपके पास आने के लिए है. बस इस चीज को समझो. एंड माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज इसका यूज करना सीखो. द मोमेंट व्हेन यू विल स्टार्ट यूजिंग इट, यू विल सी लाइफ विल बी चेंज ऑन 360 degree and you will be able to make it everything whatever you want in life. There is example of Jim Carrey and even this example also belongs to Tony Robbins also. Jim Carrey जो थे, he is a very good comedian in Hollywood, but in starting when he started his career, जैसे सबके साथ होता है, कुछ मतलब अच्छा इनकम नहीं था, or he wanted to make lots of money. He wanted to make $10 million from one assignment, and that time he was getting paid very poorly. Okay, बहुत कम payment उनको मिलती थी. And he read in a book and he maybe heard in a seminar, if he will make a check of the dream check, whatever amount he wants, and he will put all his energy, he will visualize it and apply the law of attraction, then he will achieve it. So he did the same. He put a check on his own, he write the signature of $10 million. And my dear friends, do you know, after almost 8 to 10 years, he got paid from one movie $10 million for his performance. And then he said, oh my God, I achieved it. And this has been happened with Tony Robbins, this has been happened with Jack Canfield and many more. Okay, if I will go into this story, the whole hour will go into sharing this story with you. So, my dear friends, this was for today. Now we are going to do one meditation. जैसा मैंने आपको बोला था कि I will give you one meditation for increasing your self-confidence and self-worth. Okay. Before that, I would like to announce you something, and that is, as you have seen, yesterday I conducted the program, and I gave you the best, whatever was possible from my side. Today I also gave you the best, and I promise you tomorrow also I will give you the best. Means even in 1 hour, I'm trying to give the value of 1.5 hours to you, more than 2 hours. Because my dear friends, maybe you have not paid your money, but I believe you have paid your most precious asset, and that is your time. Right? So I will do my justice with time. Tomorrow, the session will again start at 6:10, but it will be till 7:30 or 7:40. It won't be over in 7:10 only, right? Another thing, my dear friends, tomorrow I will give you an opportunity. That opportunity will be, you can connect with me for coming 30 days. Okay, and after 30 days, if you want to connect with me for more time, we can see. But for 30 days opportunity you will get. So please, everybody attend the session. Tomorrow's recording won't be shared anyhow. Okay. And now and please listen, definitely I will promote my course, but have I gave you value yesterday? Have I given you value today? The same way I will give complete value tomorrow. And it's your choice. If you want to enroll, you're most welcome. If not, even I have gratitude for you. Right? So it will be in your hands now. And my dear friends, I don't promote the whole session and spend time in selling, because I know if I have worth, if I have good content, if people has requirement, they will come to me. Now let's start the meditation. Everybody close your eyes. Focus on your breathing. Breathe in and out. Breathe in and out. When you exhale, just imagine you are exhaling all the worries, anxiety, and negativity. When you are inhaling, inhale deeply and just imagine you are inhaling
confidence, self-worth, self-esteem, happiness, success, and whatever desired life you want. Now, my dear friends, here I'm going to do a meditation, and that meditation is related to increasing your self-worth. But before that, I would like to break some of your identity. My dear friends, many a time it happens. Some of our loved one and dear one, unknowingly, you can say that, or in the hand of circumstances, they break our self-image, or maybe somebody scold us, or somebody accuse us, abuse us, argue with us, and they give some bad words to us, and we hold that word, and for a longer time, we live in that word. Okay, and that may be some images, that may be any incident, that may be any word, anything it may be. If any bad memory, anything is there, my dear friends, what we will do, for a time being, we will recall that, and forever we will remove it from our mind. Why I'm doing this? I'm doing this, my dear friend, because it's, it's like, if you want, for example, if at home there is a rat and it's died somewhere and it's stinking, what you will do? You have to remove that rat. And if you're not removing it, just you're showing sense take using, lots of perfume and all, and you're not removing it, my dear friends, don't you think it all will be wasted? In the same way, if any negative feeling, negative experiences in our inner core, and we will not remove it, then there are chances we will not get that success, whatever we are looking for. That's why we will remove this past memory if anything bad has happened with us. And then we will build the right self-image, the right identity for us. So, my dear friends, take a deep breathe in, breathe out, breathe in and out. Now, my dear friends, go into your past. And go into your past, some of the events which have happened with you. Maybe someone, elder one, or your loved one, or anyone has scolded you for anything, or maybe somebody misbehaved with you, or they have tagged you with some bad words like tum to kuch nahi kar sakte, tumhara kuch nahi hoga, you are worth for nothing, like that. Or any kind of, my dear friends, you have faced mental abuse, physical abuse, emotional abuse, or any relationship to whom you give lots of respect, but that person has not respected you. You can find out anything. Or here you can, if some event has happened, see that event in front of you right now. If some words are breaking you from inside, इसने मेरे को ऐसा बोला, मैं इसको दिखा दूंगा, कर दूंगा, तो for a time being, just listen that word. Any bad memory, if it is, please be with it for 30 seconds only, and then we will work on to this. Now, I think you have received the message. My dear friends, now just imagine whatever has happened. And now, this is time when, my dear friends, you have to remove this memory forever from your mind. And for this, what you need to do, just do one thing. If somebody has abused you, accused you for anything, please see that face. The person is saying, he is throwing those bad words to you, but you are not able to hear it. Please mute those sounds. Aap un sounds ko mute karo. Means the person is speaking, but you're not able to hear anything. Nothing is going into your mind. If something bad has happened visually, visual events is coming in front of you, please just imagine right now that event has come out from your mind. वो event आपके mind से बाहर आ गया. That event is now outside, and this event is a feet afar from you. या 1 feet आपसे दूर है. Now just imagine this event is going little 2 feet apart from you. Now it's going less 3 feet apart from you, 5 feet, 10 feet, 20 feet, 50 feet, 100 feet. It's going afar from you. Now you're not able to see anything. The same is happening with the sound. अगर किसी ने कुछ बुरा बोला, आप देखो वो sound बहुत दूर से आ रहा है. अभी आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. You're not able to hear anything. सामने वाले का मुंह चल रहा है but आवाज नहीं आ रही. And please, my dear friends, try to remove this sound and mute this. You're not able to hear anything.
And now just you can see, there is a cloud in the sky. और उस क्लाउड में आप देख रहे हो कि वो इमेज जो है वो बहुत दूर गए हैं, आवाजें भी है, वो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है. And you are now, my dear friends, you are feeling completely free from inside. You are out of that memory, you are out of that sound. And now, my dear friends, someone else what says that does not matter. What we are, that matters a lot. And what you are, just right now, you are going to build your new identity, who you are. So, my dear friends, ask to yourself, what is the reality of you, who you are exactly? And I will say here, my dear friends, you are the symbol of positivity. You are the symbol of hope. You are symbol of acceptance. You are symbol of worthiness, self-esteem. So, my dear friends, now say to yourself in your mind, I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am blessed. I feel great about myself. I feel great about myself. I feel great about myself. And my dear friends, remember, worthiness is within us. You know what talents you have, because we all are human beings. And my dear friends, remember, we all have some unique qualities in us. If God has made, who has made us? God has made us, and God never makes defected piece. Human beings make defected piece, or you can say that they give the defective tagline to humanity. God never makes defected piece. You are made in the image of God. If you are made in the image of God, you have all the resources within you. So say to yourself, I have all the resources within me. I have all the resources within me. I have all the resources within me to make my life meaningful and successful. I have all the resources within me to make my life meaningful and successful. I have all the resources within me to make my life meaningful and successful. I feel great about myself. 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 I feel worthy about myself. I feel worthy enough about myself. I feel worthy enough about myself. I feel worthy enough about myself. I believe in myself. I believe in myself. I believe in myself. I believe in myself. I like myself. I like myself. I like myself. I love myself. I love myself. I love myself. My dear friends, remember, now just make a prayer. God, I'm made in your image, as I know. So now it's my time. And as my dear friends, we know, if we are made in the image of God, then definitely we all have all the power which God had. And God has given all the power to us. So we have power to build our future. We have power to come out of each and every situation, whatever we are facing right now. Maybe it may be mental problem, it may be health problem, it may be emotional problem, whatsoever. But this belief system, this worthiness is going to bring each and every happiness in your life. And my dear friends, for this, just say to yourself, I'm committed to my results. Now I'll give some affirmations. This you have to utter for 5 minutes. I'm committed to my results. I'm committed to my results. I'm committed to my results. I make no excuses. I make no excuses. I make no excuses. I make no excuses. I do whatever it takes. I do whatever it takes. I do whatever it takes. I strive for excellence. I strive for excellence. I strive for excellence. I think in abundance, not scarcity. I think in abundance, not scarcity. I forgive everyone and I am forgiven. I forgive everyone and I am forgiven. I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am prosperous. I am prosperous. I am prosperous. I am talented. I am talented. I am talented.
I'm creative. I'm creative. I'm creative. I'm qualified. I'm qualified. I'm qualified. I'm qualified. I'm motivated. I'm motivated. I'm motivated. I'm motivated. I'm valuable. I'm valuable. I'm valuable. My dear friends, remember, this is your new identity. This is your new self. This is your newborn. And here, who you are exact. I am means what? I am means, my dear friends, man. This is your real identity, who you are. You are blessed. I'm blessed. I'm prosperous. I'm blessed. I'm prosperous. I'm redeemed. I'm redeemed. I'm redeemed. I'm confident. I'm confident. I'm confident. I'm confident. I'm secure. I'm secure. I'm secure. I'm disciplined. I'm disciplined. I'm disciplined. I'm focused. I'm focused. I'm focused. I'm valuable. I'm valuable. I'm valuable. I'm free. I'm free. I'm free. I'm determined. I'm determined. I'm determined. I'm equipped. I'm equipped. I'm equipped. I'm empowered. I'm empowered. I'm empowered. I'm anointed. I'm anointed. I'm anointed. I'm accepted and approved. I'm accepted and approved. I'm accepted and approved. I'm worthy. I'm worthy. I'm worthy. I'm love. I'm love. I'm love. Means I'm a symbol of love. I'm a symbol of acceptance. I accept things peacefully. I'm a world class. I'm a world class. I'm a world class. I'm a masterpiece. I'm a masterpiece. I'm a masterpiece. I'm the child of the Most High God. I'm the child of the Most High God. I have all the resources within me because I'm made in the image of God. And if I'm made in the image of God, if Almighty is my Father, then definitely all the virtues, qualities which that Almighty, that God has, He has given to me, that I have. So whatever I want to achieve in my life, whether it's my financial goal, whether it's my relationship goal, whether it's my worldly goal or my physical goal, I am able to accomplish everything because I have all the resources within me. Because I have all the resources within me. Now, last affirmation. My God arms are around me. My God arms are around me and protecting me. My God's arms are around me and protecting me. I have nothing to fear because I am accepted in God's world and I am made in His image. So I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. I'm powerful. I'm powerful. I'm powerful. I'm powerful. Now, last affirmation, just recite for 10 seconds. Then I will count 10 to 1 and you can open your eyes. I'm powerful. I'm powerful. I'm powerful. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. As you feel relaxed, you can open your eyes. Now, those who wants to share their experience of today's, they can share. Any 2% can unmute themselves and share, or if you have any question, please you can ask me. Anyone has any question? I will be here for next 3 minutes. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Am I audible, ma'am? Yes, sir, you are audible. Okay. So thank you so much, ma'am. You have given us wonderful value, and it was very nice experience. I have attended yesterday as well, and yeah, that was wonderful. I have a doubt and I have a question. As you share yesterday, there is only 2 reasons for procrastination. Whether you don't know, either you don't know, either
or you don't like it. Okay, but what about sometimes we know we have to do that and we know how to do that, but still we are not doing because of some kind of fear, because some kind of, you can say, fear of judging, fear of losing something, Failure. or something. So, that, Yes, the thing is that, if you talk two regions, just like it's not necessary there are only two regions. Okay, if we are, if we are postponing many works, and if we are, you can say that if we are procrastinating whatever is important for our life for a long time, then definitely there may be other reasons also. Okay, but my different, there are certain, for example, fear of failure. Right, but there are certain fears, especially there are 7-8 fears in the world. Okay, into that fear of failure comes, fear of judgment also comes. Okay, fear of death also comes, and many more. Okay, but fear of failure is something, understand, if you talk about fear of failure for anything, until it has been said, until you will not enter into the water, you will not know what is the depth of the water, right? So if we are not taking action because of fear of failure, then it means already we are 100% fail. Yes or no? बिकॉज अगर आप कोशिश करते हो तब तो चांसेस है कि 50% सक्सेसफुल हो गए, 50% आप फेल हो गए, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे, मैं फेल होऊंगा, तो मतलब यू आर सर्टिफाइंग योरसेल्फ आई एम फेल, राइट? तो उसको तो प्लीज, मतलब फियर ऑफ फेल्योर को तो आपको कंप्लीटली अपनी लाइफ से खत्म करना होगा, हर किसी को, समझा आपने? बिकॉज दैट इज समथिंग सबसे ज्यादा पोटेंशियल किल करता है, फियर ऑफ फेल्योर। वो बड़े बड़े लोगों को रहता है, ठीक है, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि इस पे एक्शन नहीं लेने का मतलब है टोटल फेल्योर, 100%। बट कुछ एक्शन लिया तो देयर आर चांसेस कि अगर मैंने बोला चलो 30 डेज मेरे साथ आप कनेक्ट हो, तो अगर आप 30 डेज हुए तो आपको चांस तो है ना, 30 डेज बाद भी आप जर्नी को कंटिन्यू करोगे, या 30 डेज तक तो आप बने रहोगे, राइट? लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो फिर जहाँ के तहाँ है एक तरीके से, क्योंकि अगर अपने से हम ये सब कर लेते तो कर लिए होते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वट एवर वी डोंट नो, wherever we need the support of someone, we need the support of someone। अगर अपने को ये लगता है कि नहीं हमको ये पता है हम कर लेंगे, तो हमारी लाइफ वहां पे होनी चाहिए थी जहां पे उसको होना है। अगर वहां पर नहीं है तो जरूर कुछ ऐसा है, मुझे पता है लेकिन मुझे एग्जीक्यूट नहीं करने आता, और उसके लिए मुझे किसी को हैंड होल्ड करना है, समझना है और आगे बढ़ना है। ओके, और प्रोक्रेस्टिनेशन के बहुत सारे रीजन, लेजीनेस हो सकता है भाई, सीधी से बंद नहीं करना, मेरे को आलस आ रहा है, अभी क्या करने को उसको गो एंड डू एक्सरसाइज थोड़ा डोपामिन सेरोटोनिन तुम्हारी बॉडी में बढ़े, राइट? it's kind of habit, I think. If you are keep postponing, definitely it's, and this program is about habit building। okay, आप हैबिट्स को ठीक करो, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप सोचो, कभी ब्रश करना कोई भूलता है? हाउ मेनी आर हियर? ब्रश करना हम भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। यस और नो? yeah, because we know it's नहाने के बाद, नहाने जाते हैं हर कोई, हम डेली नहाते हैं, गर्मी ठंडी जो भी हो, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कुछ महान आत्माएं होती है ठंडी में नहीं नहाते हैं, उनको बहुत ठंडी लगती है और नहीं नहाने से और ज्यादा ठंडी लगती है, वो ये भूल जाते हैं, राइट? तो वो जो चीजें हैबिट्स में आती है ना, वो लॉन्ग टर्म में हमारे साथ स्टे करती हैं। तो डेफिनेटली जो अभी की हमारी हैबिट्स है, इवन प्रोक्रास्टिनेशन भी एक हैबिट बनी हुई है। दैट आई एम सेइंग कि जो भी चीजें उसको, आप चैट में आओ तो आप बोलो, अगर आपको कोई डाउट है आप पूछो, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं तो सोचते रहोगे तो उससे तो आंसर मिलने वाला नहीं है। यस और नो? या तो एक जो हमारी इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग है वही कंटिन्यू होगी, राइट? सो नेक्स्ट पर्सन, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू विनीत, वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड। Thank you so much, ma'am. यस, थैंक यू। आज का जो सेशन था मैडम, वैल्यू पैक था, पावर पैक था। वॉइस इज नॉट क्लियर, हु इज स्पीकिंग? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम मंजुनाथ है। क्या आप मुझे सर स्पीक लाउड, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। Please increase the volume of your phone or your PC if you are from whatever device you have logged in. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मैडम? Yes, now I can see. गुड मॉर्निंग ज्योति मैडम, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning. मैडम आज का जो सेशन जो था बहुत ही वैल्यू पैक था और पावर पैक था, मुझे बहुत पसंद आया और बहुत काफी सीखा मैं आज के सेशन से। मेरे कुछ एक ही क्वेश्चन है, उसमें ए बी सी वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। देखिए मैडम, आई नो व्हाट आई नो, ओके, एंड आई आल्सो नो व्हाट आई डोंट नो। फॉर एग्जांपल मुझे जापानीज लैंग्वेज नहीं आती है, ये मुझे पता है, और कुछ ऐसे चीजें हैं मैडम, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, मतलब वो चीजें सक्सेस होने के लिए जरूरत है,
लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूँ। क्या आप मुझे इस पॉइंट पे थोड़ा लाइट डालेंगे? आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो टू गेट अ सक्सेस। Which point you want to clear here? 3 points दिए. First to clear, madam. I know what I know. I also know what I don't know. हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को फ्लाइट उड़ाने नहीं आती है. हाँ, यस मैडम. फॉर लास्ट थर्ड वन जो है, इसके ऊपर थोड़ा लाइट डालिए. आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, मतलब सक्सेस के लिए ये चाहिए लेकिन वो मुझे पता ही नहीं है. मतलब उसको जानने के, उसको हैबिट करने के बाद ही ये कुछ हो सकता है. मतलब ऐसे I don't know what I don't know Yeah. to get This success. we have to discuss. I don't know what I Don't don't know. Right. Listen. इसमें भी एक हिडन फैक्ट छुपा हुआ है. जी. हिडन फैक्ट ये छुपा हुआ है कि बहुत बार हम बोल रहे हैं कि आई डोंट नो व्हाट आई डोंट, राइट, बट इवन वी नो. जी, एग्जैक्टली. सक्सेस के लिए क्या चाहिए ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं पता है. द फैक्ट इज दिस, हम इतने मूर्ख नहीं है. मूर्ख रहते तो यहाँ आते ही नहीं. If we are very smart, okay, but the thing is that what we don't know means हैबिट फॉर्मेशन के बाद में जो हमारी स्टेट आएगी, जो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म चेंज होगा, राइट, वो एक डिफरेंट लेवल का होगा. आप एक एग्जांपल ये लो. आपको पता है बहुत बार जब हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती थी, ओके, जब ये मशीन गन वगैरह का टाइम नहीं था, वेपन से लोग जाके घोड़े हाथी से जाते थे, तलवार लेके जाते थे, भाले लेकर के जाते थे और लड़ाइयाँ करते थे. जी. ऐसा बहुत बार हिस्ट्री में पाया गया है कि किसी का गला कट गया, ठीक है, फिर भी वो वॉरियर जो है उसके हाथ से तलवारें चल रही थी. और ये कोई एग्जरेशन नहीं है, ये सत्य है. ठीक है, मैंने भी सुना, क्योंकि उसकी मसल मेमोरी जो थी ना वो अपना काम कर रही थी जितनी. और देखो बॉडी के हर एक पार्ट में जान होती है, ये समझ लेना. ये मत सोचना कि जान बस गले में अटकी हुई है या इन वन बॉडी पार्ट, राइट. दैट्स व्हाई इफ वी क्रॉस द रोड इमीडिएटली वी गेट कॉशियस, एंड अगर कुछ अनहैपनिंग होने वाली है तो हमें समझ में आता है, पता चल जाता है. तो व्हाट वी डोंट नो. एंड लिसन माय डियर फ्रेंड्स, लिसन. अगर हम एक लाइफ में एक मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं और वहां पे नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पे कुछ मैकेनिज्म ऐसा है जो कि हमें नहीं पता है. ठीक है ना. और उस मैकेनिज्म को हमें जानना होगा, क्योंकि अगर उसको हम नहीं जानेंगे तो फिर हम जहां के तहां ही रह जाएंगे. ठीक है ना. देयर इज समथिंग विच यू डोंट नो, or if you know you're not experiencing, until you will not experience it, until you will not make a habit, you will not get succeed. ठीक है. तो उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना. और दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें जो हम नहीं जानते हैं, बट वी डोंट नो. ठीक है ना. बहुत सी चीजें जो हम नहीं जानते हैं. और फॉर एग्जाम्पल अब डिजिटल में बहुत सारी चीजें आ गई हैं. ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल अभी कल सर ने मेरे को, सत्या सर ने बोला मैम आप वो कैमरा ठीक करो, वहां से लाइट अच्छी आएगी. वो मुझे नहीं मालूम है. और मेरे लिए डोंट नो की कैटेगरी है. पकड़ के उनको ही बोलना पड़ेगा एनी टेक्स्ट पे, सर इसको ठीक करके दो मुझे. ठीक है. क्योंकि मैं तो ट्रेनर टाइप का पर्सन हूँ भाई. जो मुझे अच्छा लगता है करती हूँ, जो नहीं लगता है मैं बोलती हूँ आई विल आउटसोर्स और आई विल टेक द हेल्प ऑफ समवन एल्स. बिकॉज इफ इवन आई विल डू इट सो. अगर मैं करूंगी भी उसको तो मेरा मन नहीं लगेगा, और मैं उसको सो करूंगी. इससे बेटर है कि मैं एक एक्सपर्ट से बेहतर करवा लूं ना, है कि नहीं. मैं उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड करूं, सामने वाला मेरी लाइफ में वैल्यू एड करे और चीजें ठीक हो जाएं. तो वो जो 4 कैटेगरी होती है, अगर वो 4 कैटेगरी को जाएंगे तो 1 घंटा अपने को एक्सप्लेन करने में लगेगा. बट यहाँ पे मान के चलो कि सीधा सिंपल सा आंसर है. आप लाइफ को जिस मुकाम पे देखना चाहते हो, अगर वो अभी नहीं पहुंची है तो कुछ तो ऐसा है जो आपको नहीं पता है. वो आपको पता करना होगा जिसको पता है. ठीक है ना. जिसमें आपका, मैं नहीं बोलते आप मेरे में भरोसा करो, जिसमें भी आपका बिलीफ सिस्टम बैठता है आप उससे क्वेश्चंस करो, पूछो. और आपको लगता है नहीं ये बंदा मुझे लगता है पहुंचाएगा, तो आप प्लीज हैंड होल्ड दैट पर्सन. आप उसका हाथ साथ मत छोड़ो. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि अगर आप अपने से कर लेते तो कर लिए होते. अगर ये हम अपने से कर लेते तो कर लिए होते, फिर हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी. हम वहां पे रहते जहाँ पे हमें रहना है. फिर हम भी नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, बिडेन और ट्रम्प की कैटेगरी में आते, है कि नहीं. अगर हम वहां पे नहीं है, अरे भाई बाबा रामदेव, सदगुरु, कोई भी कैटेगरी आप ले लो, वो लीडर्स की ले लो, पॉलिटिशियंस की ले लो, रिलीजन स्पीकर्स की ले लो, किसी की भी. तो इफ वी आर नॉट देयर, देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग दैट वी नीड टू नो. ओके. होगा, हो सकता है आप पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पाओ, बट आप ये नहीं सोचते कर चलो 100% नहीं भी एग्जीक्यूट, 50% भी करेंगे तो कम से कम हमारा ग्रोथ तो होगा ना भाई. अदरवाइज तो हम कहीं ना कहीं अपने आप से को उल्लू ही बना रहे हैं. मतलब वो लोग बोलते कोई बात नहीं, टाइम विल पास, ये समय भी बीत जाएगा. कभी कोई मुश्किल में रहता तो उसको हम सांत्वना देते हैं ना, नहीं नहीं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, टाइम विल पास. हाँ टाइम विल पास, दैट्स ट्रू. टाइम विल पास एनीवे.
Okay, so be aware, then otherwise time will pass you. Yes, Thank you, I madam. hope I Thank you. have given you the right answer. Yeah, thank you, madam. Thank you, Manjunath. Anyone else? Manisha ji, you want to say something? Anyone else who has any question? Not to worry. Okay, so let's stop here. And today we are meeting. I'm going to give you 2 assignments for today. आज आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड सुनना है, और शाम को अगर देखो ट्रैवल कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ऐसा कुछ है तो प्लीज आप ट्रैवल के टाइम में स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड सुन लो, मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में। दूसरी चीज कि आपको 15 मिनट्स का एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज सुनने के लिए नहीं है, सुनने से बॉडी चेंज नहीं होती है। ओके, डोम्स वगैरह सुनने से कुछ नहीं, मानसिक लेवल पे आपको थोड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद जहां के तहां आपको करनी है। तो आप कम से कम लेस्ली सनसन की एक्सरसाइज से आप आज शुरू करेंगे। ओके, यू विल डू दैट 15 मिनट्स ऑफ वॉक। अगर अभी टाइम है तो आप अभी करेंगे, अभी टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शाम को करेंगे। अगर नहीं टाइम है तो खाने के पहले एनीवे आप करके ही बेड पे जाएंगे। अगर आप 15 मिनट नहीं कर पाए तो 5 मिनट जरूर करेंगे। अगर आपको ऑडियो सुनने में आधे घंटे का टाइम नहीं रहा तो आप एटलीस्ट 10 मिनट्स 5 मिनट जरूर सुनेंगे, लेकिन आप सुनेंगे। यू हैव टू डू, आपको अपने मसल्स को बोलना पड़ेगा चलो चलो करना है। यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू एक्टिवेशन एनर्जी, यू हैव टू एक्टिवेट इट, राइट? सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, लेट्स मीट टुमारो। ओके, बाय। नाउ आई एम गोइंग टू लॉग आउट।